Namaskar, this is CVR English and it's time to roll the prime time news hour with me, Anukriti Sharma. Arvind Kejriwal dropped a bombshell on Sunday, that's yesterday, announcing that he would resign as the Delhi Chief Minister in the next 2 days. Viewers, one day is already over and another is yet to go. His announcement came days after he was granted bail by the Supreme Court in the liquor policy case. Viewers, if we go by his word, then the Delhi Chief Minister is likely to resign from his post tomorrow, that is September the 17th, and he has sought time to meet Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena in this case. The Chief Minister is likely to meet Saxena ji at around 4:30 p.m. tomorrow and could then tender his resignation. Earlier in the day today, the AAP leaders Manish Sisodia and Raghav Chadha met Arvind Kejriwal at his residence where they discussed the probables for the Delhi Chief Minister's post once he resigns, a day after Kejriwal's Sunday bombshell that he would resign. As feverish speculation began on the likely contenders, the opposition sneered at Kejriwal's move as a PR stunt and a mere gimmick in a bid to correct his image in the society. Following Arvind Kejriwal's statement on September 15th, where he announced his intent to resign as the Delhi CM in 2 days, BJP spokesperson Pradeep Bhandari called it a PR stunt and claimed that he was doing this only to restore his image. BJP leader Harish Khurana also questioned that if he really wanted to resign, then why not do so immediately? Another BJP leader, Manjinder Singh Sirsa, alleged that Kejriwal simply wanted to make his wife the next Delhi CM, whereas Shazia Ilmi called the Delhi CM a master of political maneuvering. Arvind Kejriwal, who was released from the Tihar jail on Friday after the Supreme Court granted him bail in the liquor policy case, announced his resignation decision in his first address to the AAP leaders and the workers on Sunday. He had also said that a legislative party meeting is expected to be held within the next 2 days to decide on his replacement. I am going to resign from the Chief Minister's position after 2 days. I will not sit in the Chief Minister's chair until the people give their verdict, and I will go to every house and every street and not sit in the Chief Minister's chair till I get a verdict from the people. That's what he said, unquote. In a post on X, formerly known as Twitter, on Sunday, Sisodia said that he too will only return as the Deputy Chief Minister of Delhi if the public approves his honesty. I worked honestly, but attempts were made to prove me dishonest by making false allegations against me under petty people politics. I was kept in jail for 17 months on false charges, and after 2 years of legal process, now even the country's top court has told me to go and do my work. But I will not sit in the chair of the Deputy Chief Minister, Education Minister right now. I did not come into politics here for the greed of chairs and posts. I have come to work honestly on education. I have also decided that I will go to public court along with Arvind Kejriwal and ask whether the public considers me honest or not. Elections are to be held in 3 to 4 months. Only if the public approves my honesty, I will sit in the chair of Deputy Chief Minister Education and work for education. Jai Hind. His tweet, roughly translated from Hindi, read something like this, viewers, unquote. Well, I can only say it's only a matter of time before the truth about the AAP leaders' integrity is out. Until then, it's pretty much a wait and watch situation. In the meantime, take a look at this special report. कानून है ईडी का कानून पीएम मिल ले 2 दिन के बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं।
इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं? आपने जेल में थे तब आपने रिजाइन नहीं किया, मॉडलिटी की बातें करते हो। ये अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। सोनिया गांधी वाला मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं कि एक डमी, जैसे मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बना दिया था और पीछे से सरकार चलाई, इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। सारे एमएलओ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। राजनीतिक पैतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। अगर रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं? ये जो ड्रामा है कि हम जनता से पूछेंगे, सवाल आज ये है कि दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता इस सवाल पूछ रही है कि आप, जब कोर्ट का फैसला आ गया कि आप जा नहीं सकते, सेक्रेटरी नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, तो आपका औचित्य क्या है मुख्यमंत्री पे पद पे बने रहने का? आपने जेल में थे तब आपने रिजाइन नहीं किया, मॉडलिटी की बातें करते हो। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप बेल पे मुख्यमंत्री हैं, आप एक्विटेड नहीं हुए, आप एक सजा याफ्ता, अब आप एक जो ट्रायल पे मुख्यमंत्री हैं, एक ट्रायल चल रहा है, आप मुख्यमंत्री हो। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर ड्रामा जो करना था, जो आप ड्रामा कर रहे हैं कि मैं रिजाइन 48 घंटे के बाद जनता से पूछ के करूंगा, आप अगर सीरियस थे, आप दिल्ली की जनता की आवाज सुन रहे थे, तो दिल्ली की जनता साफ कह रही है कि आप को रिजाइन करना चाहिए। In the meantime, with the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal expected to resign, Atishi Marlena has emerged as a strong contender for the Delhi CM role. A prominent AAP leader, Atishi Marlena holds key portfolios including education, finance and law, and has played a pivotal role in transforming Delhi's education system. Atishi Marlena's political journey began with AAP's very inception, where she was instrumental in shaping party politics and the happiness curriculum for it. A Rhodes Scholar with deep academic and grassroots experience, Atishi is now being seen as a capable leader with strong administrative skills by the Aam Aadmi Party bigwigs. Take a look at this report. लेकिन एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ युवाओं को नौकरियों की जरूरत है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं के लिए कोई भी रोजगार, युवाओं के लिए कोई भी नौकरी का प्रावधान नहीं हो रहा। अगर आज आप देखिए तो रोज रोज अखबार में खबर आती है कि जब कोई भी सरकार कोई छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी, चपड़ासी की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी निकालती है तो लाखों पढ़े लिखे युवा उस नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। जो पूरा हमारा शिक्षा तंत्र है
वो आज के दिन में युवाओं को सिर्फ नौकरी की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये प्रयास है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से जो बच्चे निकल कर आए, जो युवा निकल कर आए, वो नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और इसी के तहत पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स का कार्यक्रम चल रहा है। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को सीड मनी के पैसे दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स खुद ग्रुप्स में मिलकर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं और जो टॉप 150 स्टार्टअप्स होते हैं उनको हम ओपन करते हैं पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने बिजनेस ब्लास्टर्स में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम आज युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ हमारे जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं उसके आंकड़े मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारे एक बिजनेस ब्लास्टर्स के तहत स्टूडेंट्स ने Congress leader Supriya Srinath has criticized the Modi-led NDA government on the occasion of its 100 days in office. Labeling it as a period marked by significant failures, she condemned the government for its stance against the middle class, the farmers, youth and women's security. Srinath has accused the administration of numerous U-turns on key issues and criticized its handling of infrastructure projects including the Chhatrapati Shivaji Maharaj statue and various bridges and significant airports. She also highlighted problems such as rail accidents, terrorist attacks, crime against women, the NEET exam irregularities, rising unemployment in the country and inflation. Srinath further alleged that the government has been silent on the SEBI Adani issue and criticized its response to the ongoing conflicts in Ladakh and Manipur. Take a look. दिल्ली, जबलपुर, राजकोट के एयरपोर्ट, सुदर्शन सेतु, तमाम ऐसी चीजें ये सरकार जानी जाएगी टपकते हुए नए सदन के लिए जो संसद टपक रहा था और गर्भगृह जो श्री राम मंदिर का टपक रहा था उसके लिए। ये सरकार जानी जाएगी करीब करीब 26 आतंकी हमलों के लिए जिसमें 21 हमारे जाबाजों की शहादत हुई और करीब करीब 30 घायल हुए। ये सरकार जानी जाएगी 107 उन महिला अपराधों के लिए जहां पर 157 से ज्यादा पीड़िताएं हैं और सरकार आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों में बोलने की हिम्मत करती है। ये सरकार जानी जाएगी नीट परीक्षा में धांधली के लिए, तमाम परीक्षा चाहे वो नीट पीजी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, उसके कैंसिलेशन के लिए। ये सरकार जानी जाएगी बेरोजगारी के नए आयाम के लिए, टूटते हुए रुपए के लिए। ये सरकार जानी जाएगी विदेशी निवेश जो लगातार गिर रहा है उसके लिए। ये सरकार जानी जाएगी महंगाई की और बढ़ती मार पर। दूध महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, दाल महंगी हुई, टोल टैक्स बढ़ा, सीएनजी बढ़ा, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा, हर चीज बढ़ी। ये सरकार जानी जाएगी सेबी और अडानी के घोटालों पर बिल्कुल चुप रहने के लिए, घोटालों और भ्रष्टाचारों को संरक्षण देने के लिए। सरकार जानी जाएगी आक्रोशित लद्दाख जहां के लोग दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं, और ये सरकार जानी जाएगी 16 महीने से जलते हुए मणिपुर जहां पर हिंसा फिर से भड़क गई है, और नरेंद्र मोदी की निष्ठुरता के लिए। ये असलियत है इनकी। तो आप 100 दिन की जो रिपोर्ट कार्ड सरकार की उसको आप बिल्कुल नकारती हैं, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की भी आज बात कही जा रही है और जो तमाम बातें की जा रही हैं। Congress MP Renuka Chaudhary has questioned the government's delay in conducting a caste census, emphasizing that Rahul Gandhi has already outlined the reasons and the necessity for it. She highlighted that there is widespread public demand for the census and asserted that regardless of the government's stance, it will eventually have to take place. Chaudhary promised that the Congress, on the other hand, would implement the caste census as soon as they were to come to power. Take a look. From running a census which we have recommended. And after that, when you're going to complete your term, we'll see. It's okay. It's not enough for you to decide. The whole nation has to agree. And we are one nation, in case he doesn't know that. Census to be conducted soon, no decision yet on caste census. Why? Why is there no decision on the caste census? Rahul Gandhi ji has shown the way. He has given you the reasons, the necessity of doing this.
People across the country are asking for it. Democracy has said that this is the relevant way. What is stopping this government from doing the caste census? Now, whether they like it or not, it is going to happen. They will have to bow down and give in to what Rahul Gandhi has said, and the caste census is going to become a reality. Whether they want to do it or not, it will happen, because as soon as we are there, we will do it. He has spent most of time outside. He does not love his country. He also blamed that if there should be an award to catch the #1 terrorist and biggest enemies of country, it should be on Rahul Gandhi. What a shame that this man talks like that. He belongs. BJP MP Bansuri Swaraj has responded to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's statement about resigning from his position, accusing him of using the resignation as a political cover for some other ulterior gains. Swaraj has highlighted that the court had deemed Kejriwal unfit to be the CM due to his involvement in a major liquor scam, which was also a bail condition, preventing him from signing on files or even visiting the Chief Minister's residence. She suggested that Kejriwal's resignation, if based on morality, should have occurred 177 days ago and labelled him as someone who frequently changes his own stance. यानी कि कल के बाद वो इस्तीफा देने वाले हैं. हाउ डू यू सी दिस होल सिनेरियो? क्या आपको लगता है कि इस्तीफा होगा? कौन मंत्री बनेगा? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं दिल्ली वालों के लिए? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी जो बेल कंडीशन है, जहां पर कोर्ट ने उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए उन्हें इस योग्य नहीं माना कि वो सीएम की भूमिका निभाते हुए ना तो वो किसी फाइल पे हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना वो सीएम के दफ्तर जा सकते हैं, इस विवशता पर उन्होंने एक नैतिकता का आवरण देकर एक राजनीतिक ढोंग रचा है, ये इस्तीफे का दावा करके। ये इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था, अगर वाकई इस निर्णय का आधार नैतिकता थी। लेकिन अभी देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो यू टर्न के मास्टर हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो 2 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी थी 48 घंटे की, क्या उनके दल में समन्वय नहीं बन रहा? किसी प्रकार का दंगल चल रहा है क्या? आपको लगता है कि सत्ता में परिवर्तन की एक लहर हो रही है दिल्ली के लिए? सत्ता में परिवर्तन की एक लहर दिल्ली के लिए जरूर हो रही है, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और वो समझ गए हैं कि यहां पर 1 दशक तक आम आदमी पार्टी की सत्ता होने के बावजूद पानी जो पीने का होता है उसमें सीवेज मिक्स होकर आता है। दिल्ली के बाशिंदे ये जानते हैं कि सड़क, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये ऐसी जो मूल आधारित जो मूल सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी ये केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक तक केजरीवाल जी ने यहां पर सत्ता भोगी है, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं करा। हां, बहाने जरूर बनाए हैं, कभी अधिकारियों पे दोषारोपण कर देते हैं, कभी एलजी पे दोषारोपण कर देते हैं, लेकिन जब इनकी नीयत होती है तो कोविड के बीच में भी शीश महल जरूर बन जाता है, जहां पर 8 लाख के पर्दे और 6 करोड़ का मार्बल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने सुख के लिए जरूर लगवाते हैं। इस्तीफा सौंपेंगे और Aam Aadmi Party leader Sandeep Pathak has announced that the campaign for the Haryana Assembly elections will involve travelling from village to village. He has also stated that the decision on the next Chief Minister of Delhi will be made in the next 1 to 2 days during a legislative party meeting. Pathak has emphasized that Arvind Kejriwal is not driven by power but values his honor the most. 15 दिन का मॉड्यूल जो है, जो काम है, कैंपेन है, इनसे डिस्कस किए हैं। अब सारे अपने अपने विधानसभा में लग के एक गांव में जाकर कैंपेन करेंगे और पूरी ताकत से जनता को ये बताएंगे कि सारी पार्टियों को हरियाणा की जनता ने बार बार मौका दिया है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए, अगर वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे तो आगे आप वोट देना, अगर आपको लगे कि वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आगे वोट मत देना। दिल्ली के नेक्स्ट सीएम कौन होंगे? और सेकंड इसी में जुड़ा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल जैसे हरियाणा का लाल माना जाता है, क्या वो हरियाणा की कमान संभालेंगे? देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा वो अब अगले 1-2 दिन में तय हो जाएगा। जो सर ने अभी बताया था कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। जो अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपना सारा जीवन उसने ईमानदारी से जिया है,
सारी नौकरियां छोड़ दी, सरकार को एक बारी छोड़ दिया। ऐसे अरविंद केजरीवाल पे एक लांछन लगा है। लांछन क्या है कि इन्होंने घोटाला करके बेईमानी करी है। कोई भी ईमानदार आदमी इस देश का ये कैसे बर्दाश्त करेगा उस पे जो लांछन लगा है। तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता का मोह नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तो उन्होंने ये तय किया है कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। Defence Minister Rajnath Singh met with the medal winners and the members of the Indian contingent from the Paris 2024 Paralympics today. During the meeting, Singh extended his congratulations and praised the athletes for their exceptional performances and dedication towards their sports. He acknowledged their hard work and the inspiration that they provide to the entire nation. The interaction also included discussions about the achievements of the athletes and their contributions towards enhancing India's standing in the global sports arena. Singh emphasized the government's commitment to supporting and encouraging these athletes, particularly those who have overcome significant challenges to excel in their respective fields. Take a look. सबका जरा नाम बतलाइए अलग अलग। मेरा नाम सर प्रणव शर्मा है। अच्छा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था पैरालंपिक्स में और मैंने सिल्वर मेडल जीता है। कैटेगरी F51 क्लब प्रो इवेंट पैरा एथलेटिक्स में। बताइए। सर मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं कोच हूँ सुमित अंतिल का, जिनका भी गोल्ड मेडल आया है। मेरा नाम सुमित अंतिल है। 2 गोल्ड होगा सर मेरे पास में, पिछले में भी गोल्ड था सर, इसकी बार भी गोल्ड। मैं सुंदर सिंह गुजर सर, मेरा पिछले पैरालंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल था और इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल है। कहाँ के रहने वाले? यूपी? सर मैं करौली राजस्थान। अच्छा, करौली राजस्थान के। मैं डॉक्टर विपिन कुमार, इसका फिजियो। अच्छा, फिजियो। मैं डिस्कस थ्रो करती हूँ और ये मेरा पहला पैरालंपिक्स था और इसमें मेरी 8th रैंक आई। और अधिक मेडल्स लेकर आए आप। सर जिस तरह काम कर रहे हैं सर, तो उसी तरह से कहीं भी रहोगे आपको आगे ही रहना है। Telangana Chief Minister Revanthreddy has unveiled the statue of former Prime Minister Rajiv Gandhi at the Secretariat. Now viewers, this event comes amid the ongoing political tensions between the ruling Congress party and its main opposition, Bharat Rashtra Samiti or the BRS party, which has been opposing it. Here's a report. Shifting focus to the ongoing US presidential campaign, it is only getting increasingly controversial and dramatic with each passing day as the momentum builds up to November the 5th. Former US President and Republican candidate Donald Trump was rushed to safety following an assassination attempt at his West Palm Beach golf course.
Viewers, the gunman, identified as 58-year-old Ryan Wesley Routh, was spotted by Secret Service agents and was later arrested. This assassination attempt on Trump occurs almost 2 months after the previous one. The earlier incident happened in July during a rally in Butler, Pennsylvania. And in that case, Trump narrowly escaped being shot in the head. He was grazed by a bullet on his ear. However, a nearby supporter was struck by the bullet and died. Details about the latest gunman are still emerging, but the US media has identified the suspect as Ryan Wesley Routh. Here's what we know so far. The assassination attempt took place at the Trump International Golf Course in West Palm Beach, located about 15 minutes from Trump's Mar-a-Lago home in Florida. The gunman was first seen by Secret Service agents who were clearing holes ahead of where Trump was playing. The gunman, who was between 300 and 500 yards away, was spotted with an AK-47 style assault rifle. Agents also noticed that the muzzle of the gun sticking through the bushes was apparent. Upon spotting the gunman, the agents fired at least 4 rounds according to media reports. After being spotted by the agents, Ryan Wesley Routh, the gunman, dropped his weapon, a scope, 2 backpacks and a GoPro device before fleeing the scene in a black Nissan car, confirmed Palm Beach County Sheriff Rick Bradshaw during a news conference. Agents managed to capture some photos of the car and its license plate, and authorities later arrested the suspect Ryan Routh in Martin County, approximately 61 kilometers away from Trump's golf course, according to the media. After his arrest, Routh appeared to be quite calm, interestingly. So who is Ryan Wesley Routh? Ryan Wesley Routh, a 58-year-old Democrat supporter, was arrested on Sunday after what the FBI called an apparent assassination attempt against Trump. Routh, who owns a small construction company in Hawaii, had publicly criticized Trump on social media, according to the media reports. And ironically, his son, Oran Routh, describes his father as a loving, caring, and an honest, hard-working man. Routh had previously claimed to be a strong supporter of Ukraine and even traveled to Kyiv to fight in the ongoing war against Russia. He mentioned that once in Kyiv, he helped recruit individuals to join the conflict too. Routh has also self-published a 291-page book where he expressed his disappointment with the war in Ukraine, calling it impossible to win. In the book, he also discussed the Taliban's takeover of Afghanistan and the rising military tension in Taiwan due to pressure from China. Media reports have claimed that Ryan Routh has had a criminal history, facing charges and being convicted of multiple felonies in Guilford County, North Carolina, between 2002 and 2010. His charges included carrying a concealed weapon, resisting arrest, driving with a revoked license, and a hit and run involving a motor vehicle. Routh attended the North Carolina Agricultural and Technical State University before relocating to Hawaii in 2018, according to reports. Although a Democrat supporter, Routh had also backed Republican candidates Vivek Ramaswamy and Nikki Haley before they dropped out of the race. In his own social media posts, he urged President Biden to focus his campaign on preserving America's democracy and freedom while accusing Trump of seeking to, quote-unquote, enslave Americans under a master. One of Routh's posts on X, formerly known as Twitter, from April 22 slammed Trump using the slogan, "Democracy is on the ballot and we cannot afford to lose," which echoes statements made by President Biden and Vice President Kamala Harris. However, despite this assassination attempt, Donald Trump was unharmed. In a message to his supporters shortly after the incident, Trump assured them that he was safe and declared that he will never surrender.
There were gunshots in my vicinity, but before rumors start spiraling out of control, I wanted you to hear this first. I am safe and well, Trump said in an email, unquote. In the meantime, I will also give you the updates on the part of the statement that is now being released on the election campaign that of course continues. Trump's campaign team has issued a statement online. Trump Vance Make America Great Again 2024, the Trump campaign statement, which goes on to say, and I quote, President Trump is safe following the gunshots in his vicinity. No further details at this time. And this has been released as a part of the Trump-Vance US election campaign. Both the party leaders have absolutely condemned the assassination attempt. President Joe Biden addressed this incident on X, writing, and I'm quoting him here, my team has briefed me regarding what federal law enforcement is investigating as a possible assassination attempt of former President Trump today. A suspect is in custody, and I commend the work of the Secret Service and their law enforcement partners for their vigilance and their efforts to keep the former president and those around him safe. I'm relieved that the former president is unharmed, unquote. Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris wrote on X2 that she had been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and that she was glad that Trump was safe. Violence indeed had no place in America. Trump's running mate J.D. Vance expressed relief as well, posting, and I'm quoting him here, I'm glad President is safe. I spoke to him before the news was public, and he was amazingly in good spirits. Still much we don't know, but I'll be hugging my kids extra tight tonight and saying a prayer of gratitude, unquote. Minnesota Governor Tim Walz echoed similar sentiments, writing, Gwen and I are glad to hear that Donald Trump is safe. Violence has no place in this country, and it's not who we are as a nation. Take a look at this report. And that's a wrap on this edition of Prime Time. This is Anukriti Sharma signing off. Keep watching CVR English.